गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अग्नि 5 मिसाइल। तो अभी आपको पता होगा कि इंडिया ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट किया है अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा पर। तो ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है इस मिसाइल में, और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर्स तक की। और ये इंडिजिनसली बिल्ट है, इंडिया ने इसे खुद बनाया है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर चलता है ये। एक बार इसको फायर कर दिया तो इसको सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो एनिमी कंट्री का होगा वही सिर्फ इसको रोक सकता है, वरना ये रुकेगा नहीं। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो 1.5 टन का लेकर जा सकता है, और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है, वो हम डिस्कस डिटेल में तब करेंगे अगर जब कंफर्म हो जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी इसमें इंस्टॉल की गई है कि नहीं। फॉर दोज जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको सर्च कर सकते हैं MIRV। तो MIRV टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। MIRV में क्या होता है कि आप एक अग्नि 5 मिसाइल में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स अटैच करके भेज सकते हो, और बीच रास्ते में या एक ही उस टारगेट एरिया पर जाकर ये जो है वो बहुत सारे वेपन्स को इकट्ठे ही जो है वो अलग अलग जगह पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मतलब आप एक ही बारी में सिर्फ बीजिंग को ही अटैक करना चाहते हो तो बीजिंग पे ही सारा अटैक कर सकते हो, या फिर आप वो बीच रास्ते में जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करता जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि MIRV इसमें यूज़ किया गया है या नहीं, बट कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं कि इसमें किया हुआ है उसका यूज़। बट गवर्नमेंट से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो इसलिए हम अभी ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये 1.5 टन्स का न्यूक्लियर वॉर हेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उतना ये लेकर जा सकता है। और ये जो हमारा APJ अब्दुल कलाम जी का मिशन था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी का ही एक पार्ट था अग्नि सीरीज़ जो है। तो अग्नि सीरीज़ में बहुत तरह तरह के मिसाइल हैं, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, और एक अग्नि प्राइम भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, अग्नि P। तो जो अग्नि P है वो तो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है, और 1000 टू 2000 किलोमीटर्स की उसकी क्षमता है, और अग्नि 1 को रिप्लेस करने के लिए उसको बनाया गया था। तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रोग्राम था। 1983 में उन्होंने गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था इस प्रोग्राम को, और कहा था कि हम मार्च 2022 तक जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी ले आएगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। तो 5 मिसाइल्स इसके अंदर डेवलप किए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो आकाश जो अग्नि मिसाइल है उसका 5th वर्जन जो है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब जो है बाकियों के भी अलग अलग जो वर्जन जो है, जैसे 3rd जनरेशन भी जो है, आपका नाग का भी टेस्ट हुआ था, आकाश का भी अभी अब रिसेंट एक टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये मिशन, ये प्रोग्राम, बट इसकी जो है वो अपग्रेडेशन हम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। अग्नि 5. So recently, a surface-to-surface ballistic missile Agni 5 was successfully launched from the APJ Abdul Kalam Island, Odisha. The best thing about this missile is that it has range up to 5000 kilometers. So we are going to cover Beijing and Shanghai both in our orbit of influence. Of course, in this missile influence. So Agni 5 is a surface to surface indigenously built missile, a ballistic missile. Okay, so we have already discussed what is a ballistic missile. We have already discussed in a separate video. So it can carry a nuclear warhead of about 1.5 tons, and it is working on fire and forget principle, in which once you fire it, it cannot be stopped. And of course there is an exception. The missile defense system of the enemy territories, interceptor missile can target it. So this Agni series of missiles were developed under the Integrated Guided Missile Development Program, which was conceived by Dr. APJ Abdul Kalam, and it was given a go ahead by the government in 1983 so as to attain self sufficiency in the field of missile technology by the year March 2012. So there were 5 series of missiles in this IEGMDBP program: Prithvi, Agni, Trishul, Nag, and Akash. So there is a terminology which is used for you to remember this, that is Patna. Amongst the Agni class of missiles, this Agni 5 is the latest. It has a range of over 5000 kilometers. It's an ICBM, like you know that it's an intercontinental ballistic missile.
So we already also discussed about the Agni P, which was tested just few months ago, and it is supposed to replace the aged Agni 1 missile because of its range, and now it is this Agni Prime is a canisterized missile, so you can take it anywhere, it will be safe, and you can launch it from that particular place. Okay, so now let us see the next topic, which is इन्फेंट्री डे. तो पीएम मोदी ने जो है 75th इन्फेंट्री डे पर जो है वो ग्रीटिंग्स दी हैं. तो ये सब इन्फेंट्री डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जब 26 अक्टूबर को जो महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने जो है, जो राजा थे, डोगरा राजा थे, उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और 27 अक्टूबर को 1947 को इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, जो पाकिस्तान आर्मी कबाइलियों के रूप में आकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा करने लगी थी. तो इंडिया ने वहाँ अपनी फोर्सेस भेजकर जो है उस कब्ज़े को रोका था. ठीक है, तो इसलिए हम इसको इन्फेंट्री डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो महाराजा हरी सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक दिन पहले साइन किया था 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को जो है हम इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तानी इन्वेडर्स को वहाँ से भगा दिया था. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. इन्फेंट्री डे. So on 27th October, we celebrate this Infantry Day because on this very day in 1947, Indian Army warded off Pakistani invaders who rather invaded Jammu and Kashmir in a disguise of tribal militia, and they tried to occupy the Jammu and Kashmir state. But on 26th of October, Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir signed the instrument of accession with India, and on 27th of October we sent our forces to ward off these Pakistani military personnel who were disguised as tribals, and we successfully warded them off, and we saved this state from the Pakistani invasion and Pakistani aggression, and that's why we celebrate this particular day as Infantry Day. Okay, so now let us see the next topic, which is Climate Vulnerability Index. तो अभी एक environmental think tank है, Council on Energy, Environment and Water. उन्होंने ये इन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है. ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे किया गया है, असेसमेंट किया गया है, जिसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स को देखा गया है कि वो कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से लेकर. ठीक है, जैसे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स एट्सेट्रा. इतना इन सब एक्सट्रीम वेदर्स का कितना इफेक्ट पड़ेगा इन डिस्ट्रिक्ट्स पर, इसका जो है वो असेसमेंट किया गया है. तो इस CVI में, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है, इसको CVI कह रहे हैं, तो CVI में ऐसे जो है वो एरियाज़ को देखा गया है, एक्सपोजर को देखा गया है कि कितने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं ये, कि मतलब कितने ज़्यादा प्रोन है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पे ये डिस्ट्रिक्ट्स, और कितने सेंसिटिव हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इन वेदर इवेंट्स का, और अडेप्टिव कैपेसिटी, कि क्या इनके पास कोई रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, क्या ये लड़ सकते हैं ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से. इन सब को जो है वो मैप किया गया है, और स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान की गई हैं. ठीक है, तो इन्होंने इवन सजेशंस भी दिए हैं कि आप कैसे जो है वो इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो है वो फाइट कर सकते हो. ठीक है, तो अब इसमें जो है हाइड्रो और मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स दोनों को कंबाइन करके जो है वो बताया गया है, कंबाइन रिस्क बताया गया है. और क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो कोई डायरेक्टली कोई आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जो डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट तो हो सकता है, बट डायरेक्टली क्योंकि कोई रिस्क नहीं है क्लाइमेट की वजह से जो है अर्थक्वेक के ऊपर, तो अर्थक्वेक को जो है इसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया है. सिर्फ जो है जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्रॉट्स, इन सब का जो कि हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं, उन्हीं को ही सिर्फ इसमें जो है वो कवर किया गया है. ठीक है, तो अब ज़रूरत क्या थी ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाने की? तो अभी एक जर्मन वॉच की एक फाइंडिंग्स है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं. 3 डिस्ट्रिक्ट, हर 4 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में जो हैं वो एक्सट्रीम इवेंट हॉटस्पॉट्स हैं, और अगर 1 डिग्री राइज भी होता है टेम्परेचर में तो उससे 3% इंक्रीज़ हो जाएगा आपके रेनफॉल में. तो उसकी वजह से हमारे साइक्लोन्स, फ्लड्स या ऐसी सिचुएशन आ सकती है. तो अब ये फाइंडिंग्स क्या कह रही है हमारी CVI की? तो CVI कह रहा है
कि असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जैसे जो के स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। 27 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को लेकर। 463 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लेकर वल्नरेबल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोस्टली फ्लड्स का खतरा है और साउथ और सेंट्रल एरिया स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीम ड्रॉट्स का खतरा है। ठीक है, अब रिकमेंडेशंस भी दिए उन्होंने कुछ। उन्होंने कहा है कि एक आप क्लाइमेट एटलस बना लो क्लाइमेट रिस्क की, जिससे आप मैप कर सको कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये वेदर की क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटीज़ हमको देखने को मिलती है, ताकि हम ठीक से प्लान कर सकें। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि कोस्टल मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और फॉरकास्टिंग भी हो जाएगी अगर आप ऐसी मैप बना देते हो तो। फिर एक सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट रिस्क कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ताकि हम जो है इन्वायरमेंटल जो रिस्क है उसको कम कर सकें और सेंट्रल लेवल पर एक प्लानिंग का हम जो है वो देख सकें कि कैसे क्लाइमेट रिस्क से को हम कम कर सकते हैं। फिर क्लाइमेट सेंसिटिविटी लेड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, मतलब आपके जो है पूरे लैंडस्केप में रिहेबिलिटेशन कैसे करें, रिस्टोरेशन कैसे करें, ताकि नेचुरल इकोसिस्टम्स को हम कैसे बचाएं, ताकि हम डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसको भी ना रोकें और जो है हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकें। तो ये भी उन्होंने क्लाइमेट सेंसिटिव लैंडस्केप रिस्टोरेशन मॉडल की भी बात की है इसमें। फिर बोला है इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइलिंग। ठीक है, तो अब आप जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आप रिस्क प्रोफाइलिंग करो अपने क्लाइमेट कि आपका इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से आपके क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करो, ये भी उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने बोला है क्लाइमेट रिस्क इंटरलिंक्ड अडेप्टेशन फाइनेंसिंग। तो जो आप फाइनेंसिंग करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आप पैसा जो है जनरेट करते हो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जनरेट करते हो और आप जो है क्लाइमेट रिस्क को भी जो है वो मिटिगेट करने के लिए जो है उसके हिसाब से भी आप अडेप्टेशन फाइनेंसिंग लेकर आओ, ताकि आप अपने जो उस पैसे को इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो खर्च कर सको। ठीक है, तो ग्रीन फाइनेंसिंग की बात भी इसमें की जा रही है। So now let us see this topic in English. Climate Vulnerability Index. So an environmental think tank, namely Council on Energy, Environment and Water. This think tank has carried out a first of its kind district level climate vulnerability assessment in India. So this assessment has been named as Climate Vulnerability Index, and it has analyzed over 640 districts in India to assess their vulnerability to extreme weather events like cyclones, floods, heat waves, droughts, etc. So this CVI, this Climate Vulnerability Index, is mapping exposure of districts with respect to extreme weather events. It is also overseeing how much these districts are sensitive to such weather event, and if they are adaptive or not. So it is also assessing if any extreme weather event strikes such districts, would they be able to adapt it, or would they be able to cope with such an event, or what would be their response in that case. It has also analyzed such issues. So it is also asking, it will this index will also help us to map critical vulnerabilities and plan our strategies accordingly, so that we can minimize the damage caused by such climate risk climate induced disasters. So this index is basically analyzing the hydrometeorological disasters, okay, like floods, cyclones, droughts, and it is not focusing on other disasters like earthquakes, of course, because they are not directly linked to climate change. Of course, there may be an indirect relationship to it, but this index is focusing on hydrological and meteorological disasters. So what is the need of such a climate vulnerability index? Because last year German watch findings said that India is the seventh most vulnerable country in the world with respect to climate extremes, and we are vulnerable to extreme weather events. 3 out of 4 districts in India are extreme event hotspots. Every single degree rise in temperature will lead to a 3% increase in rainfall. So that would be a difficult situation for India, because many of our coastal states will be vulnerable to flooding. Okay, so what are the findings of this index? So this CVI has said that Assam,
Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Bihar are the most vulnerable states with respect to extreme climate events. 27 Indian states and union territories, as well as 463 districts out of 640 districts, are vulnerable to extreme weather events. So, it is also saying that northeastern states are vulnerable to floods, and south and central states are more vulnerable to extreme droughts. Okay, so apart from the diagnosis of this climate risk related issues, it has also made some recommendations. So let's look at that also. So it has said that a high resolution climate risk atlas needs to be prepared so that we can map out the critical vulnerabilities at the district level, so that we can also provide coastal monitoring support and forecasting in case of any disasters like cyclones and other extreme events like flash flood. So it is also saying that we must have a centralized climate risk commission which can plan and strategize our environmental activities. It is also saying that we must take climate sensitivity led landscape restoration so that we can restore and rehabilitate our natural ecosystems without disturbing our developmental process. We can also integrate climate risk profiling in our infrastructure planning so that we can increase its adaptive capacity. It is also talking about green financing so that we can garner resources to invest in our climate to invest those resources in mitigating our climate risks. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंसुलिन. तो अभी एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया है कि इंसुलिन का लिवर सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो है आपके कुछ माइस के ऊपर रिसर्च किया गया है, मतलब आपके जो चूहे होते हैं उनके ऊपर रिसर्च किया गया है. तो और उनके लिवर सेल्स के ऊपर जो है इंसुलिन का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है उसका रिसर्च करने से यही पता लगा है कि इंसुलिन की अमाउंट से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी आप आगे बताते हैं कि क्या कौन सी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये. तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन जो है आपकी जो बॉडी सिक्रीट कर रही है, तो उससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बी सेल्स जो है पैंक्रियास के वो सिक्रीट करते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट किया जा सके. ठीक है, तो अब ये इंसुलिन सिग्नलिंग क्या है. ठीक है, तो अब आपकी बॉडी में जितना इंसुलिन का लेवल होता है उसी हिसाब से बॉडी को ये पता लगता है कि उतनी ही हम जो है बॉडी में ग्लूकोज या जिसको हम शुगर भी आप कह सकते हो उसको हम रेगुलेट करें. ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में बहुत कम इंसुलिन लेवल है तो उससे आपकी बॉडी क्या सिग्नल या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है कि हमारे पास ज़्यादा इंसुलिन नहीं है, हम जितना हमारे पास अवेलेबल इंसुलिन है उसी से ही हम उतना ही हम बॉडी ग्लूकोज को रेगुलेट कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन अवेलेबल है तो आपकी बॉडी ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज को रेगुलेट कर पाएगी. ठीक है, तो यही सिर्फ जो है इंसुलिन सिग्नलिंग को जो है इनके बीच में क्या जो है रिलेशनशिप है इसको हमको पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें उसको कुछ जो है वो चेंज कर सकते हैं तो हम जो है वो बॉडी में इंसुलिन को या फिर जो हम ब्लड जो आपके ग्लूकोज लेवल्स को हम जो है रेगुलेट करने में हम कुछ ब्रेक थ्रू कर पाएंगे. तो इसीलिए उन्होंने जो है सबसे पहले माइस के लिवर सेल्स के ऊपर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इंसुलिन की अमाउंट से बॉडी में क्या इन्फॉर्मेशन जाती है कि वो रेगुलेट कैसे करे जो आपकी ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको. ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन की एबनॉर्मेलिटी आती बहुत कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली बात है उतने ही कम जो है वो रेगुलेट कर पाएगी ग्लूकोज लेवल्स को. ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में कम इंसुलिन हो लेकिन हम उसको किसी तरह से सिग्नल ये दे पाएँ कि नहीं वो इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, तो क्या हम आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को जो है वो हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं. तो ये सब आपको आने वाले टाइम में इसी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से पता लग सकता है. ठीक है, दैट्स वाई ये जो है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. इंसुलिन. So recently a group of scientists have made a study and they have examined the effect of insulin on liver cells taken from mice, and they have uncovered how insulin amounts shape the flow of information through the signaling network. So first of all you must be knowing that insulin is a hormone which is secreted by the B cells of pancreas, and it helps in the ability of our body to regulate glucose metabolism. So
how does your body know how much amount of glucose has to be regulated or disposed of? So the amount of insulin affects it. Okay, so if you have ample amount of insulin in the body will flow information to your to your digestive system that we have ample amount of insulin, so we can we need not store a lot of glucose in our liver, and we can dispose it or stimulate that glucose or transport that glucose in our skeletal muscle and fat. So uh, in case this insulin amount is decreased, then our body would not store would store more and would not regulate more. Okay, so like let me give you a very simple example. If you have high insulin level, body would not store the glucose in your skeletal muscle or fat. It would rather or I'm sorry, it would not store the glucose level in your liver. It would regulate that sugar level, and it would send it to skeletal muscle and fat. But if your body has less amount of insulin, then it would understand that yes, I have less insulin level, so I would not be able to regulate the glucose level in the body. That's why I need to store all this sugar in the liver, so that whenever the amount of insulin is increased in the body, I would bring back this sugar from the liver, and I would regulate it before transferring them to skeletal muscle and fat. Okay, so the amount of insulin in your body is determining how much sugar is stored in your liver cells and how much is sent to your skeletal muscle and fat. So in case if we somehow try to uh, regulate this flow of information, like whatever is telling the body that you have to store this much and you have to send this much amount of sugar in your skeletal muscles, if we somehow change this flow of information, could we be able to uh, change the amount of flow of this glucose in the liver and in the skeletal muscle and fat? So for such an experiment, these researchers have made such an experiment, and they have seen how this insulin amount would be shaping the flow of information through this signal network. Okay, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बारबाडोस. तो बारबाडोस जो है उसने अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया है. तो पहले यही गवर्नर जनरल होते थे, तो उन्होंने अब जो है वो रिपब्लिक बन रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ रैम्स जो है उसको छोड़ रहे हैं. आपको लास्ट ईयर ये न्यूज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है. तो बारबाडोस जो है वो अब सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर चुके हैं. अब ब्रिटेन की जो क्वीन एलिजाबेथ टू है वो उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, ठीक है. तो बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है जो कि आपका कैरिबियन रीजन में है. 13 डिग्रीज नॉर्थ के आसपास जो इक्वेटर में लैटिट्यूड है वहाँ पर पड़ती है ये. तो ये साउथ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट की जो बाउंड्री है वहाँ पर पड़ती है, ठीक है. तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ऐसी एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स की, जो कि पहले कभी ना कभी कॉलोनीज रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम की. अब याद रखो, सारी जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस में जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट थी, ठीक है. कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जैसे रवांडा या मोज़ाम्बिक टाइप, तो वो कभी भी ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट नहीं थी, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का पार्ट अभी हैं, ठीक है. तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है उसमें जो है उसकी हेड जो है वो कॉमनवेल्थ की क्वीन एलिजाबेथ हैं, ठीक है. तो जो कि जो ब्रिटिश क्वीन है, और इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कोई बहुत पॉलिटिकल पावर आ गई है मेंबर नेशंस के ऊपर. मेंबर नेशंस अपना सोवरन है, बस वो एक नॉमिनल हेड हैं जो कि कॉमनवेल्थ और नेशंस की जो आपका ग्रुपिंग है उसकी, ठीक है. अब ये कॉमनवेल्थ एक समझ लो एक बस एक ग्रुप है जिसके अंदर क्लोज और इक्वल इंटरेक्शन होता है, इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन होता है, डेमोक्रेसी के नाम पर कोऑपरेशन होता है, ठीक है. तो ये एक पुराना एक रैलिक ऑफ द पास्ट है जो भी चलता आ रहा है. इसके अंदर अब जो है सिर्फ कोऑपरेशन के लिए ही रह गया है, ठीक है. तो अब एक इसके अंदर ना एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ रैम्स. कॉमनवेल्थ रैम्स
वो वाले ग्रुप है जिसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी अभी भी जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो ब्रिटिश क्वीन है, ठीक है। तो जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब की अभी भी जो आपकी जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो ब्रिटिश की जो है क्वीन वही है, ठीक है। अभी तक जो है बारबाडोस भी इस कॉमनवेल्थ रेम्स का पार्ट था, लेकिन अब उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है और अब वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर चुके हैं। तो अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, मोज़ाम्बिक, नामीबिया और रवांडा, ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं थी, लेकिन ये अभी जो है कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है, ठीक है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं इस कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में। तो जब 1884 में लॉर्ड रॉसबेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तब उन्होंने बोला था कि क्योंकि तब तक ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ पर एक डोमिनियन बन चुका था ब्रिटेन का, ठीक है, एक फॉर्मर कॉलोनी थी लेकिन उसको डोमिनियन स्टेटस मिल चुका था। तब उन्होंने बोला था कि जितनी जो ये कॉलोनीज़ जो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, जो डोमिनियन बन चुकी हैं, वो इक्वल हैं और ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक पार्ट है, ठीक है। फिर 1920s में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर जो है जितनी भी ऐसे सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ बना चुके था ब्रिटेन, या डोमिनियन स्टेटस जिनको दे चुका था, उन सब की इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने बोला कि ये सब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है, ठीक है। फिर एक स्टैच्यूट प्रॉपर निकाला गया वेस्टमिंस्टर का 1931 में, उससे जो है इसको फॉर्मलाइज किया गया और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है उसको, या फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है वो बनाया गया, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ क्वीन रूल इन इंडिया क्या है? तो क्वीन की जो फैमिली है जिसको हम हाउस ऑफ विंडसर बोलते हैं, उन्होंने जो है 1876 से जो है इंडिया के ऊपर रूल किया। तो जो लास्ट पर्सन जो एम्परर ऑफ इंडिया थे वो थे जॉर्ज सिक्स, और क्वीन एलिजाबेथ के वो फादर थे, ठीक है, जो अभी क्वीन एलिजाबेथ टू है उनके फादर थे वो। तो अब विंडसर्स जो है उनका लास्ट जो है आप इंडिया के साथ टाइज जो है वो 1950 में रहे। तो इंडिया 1950 में रिपब्लिक बन गया और इंडिया ने ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश जो ये हाउस ऑफ विंडसर है इनके साथ अपने टाइज को तोड़ दिया, ठीक है। So now let us see this topic in English. Barbados. So Barbados was a part of Commonwealth realms, but it decided that it will have its own president and it will not have any governor general anymore, because it decided that it will not have any British Queen Elizabeth II as its head of the state. Okay, so earlier the British Queen. So what happened earlier was that in any Commonwealth realms countries like Australia, New Zealand, Canada, the government of that particular country nominates a person for the post of governor general. Okay, so like in let's take the example of India. If India were a part of Commonwealth realms, so India would be nominating uh, Ramnath Kovindji's name as the Governor General, and British Queen would not have any veto over it. British Queen would just sign it, and the Queen would appoint Ramnath Kovindji as the Governor General of India. Okay, so of course she would not have any say over it. It's just nominal position, but India does not have any such arrangement. India is a proper republic. India elects its own president. India does not have any British Queen as the head of the state. A similar arrangement is being worked out in Barbados also. So the earlier Governor General Sandra Mason, she will be the next president of Barbados, and she will be she will become the first president of Barbados, because earlier she was the Governor General and she was a part of this Barbados was a part of this Commonwealth realms, but now it has become an independent nation and it has become basically a republic. Okay, so this Barbados is an island country which is located in Caribbean region. It is located at roughly 13° north of the equator. It is situated at the confluence of South American and Caribbean plates. So this Commonwealth of Nations, it's an association of independent sovereign states. So just don't confuse, because every member of this Commonwealth is a sovereign state, and most of them rather, were part of the British colonial empire earlier. Even now, the head of the Commonwealth is British Queen, that is Elizabeth II. So currently, this Commonwealth of Nations is nothing just but a group
where the member states coordinate with each other over economic issues and other issues like democracy, etc. So there is a small component of Commonwealth, that is the Commonwealth realms that we discussed, in which the British monarch is serving as the head of the state even now. So there are certain countries like Canada, Australia, New Zealand, and some more, in which the British Queen appoints the Governor General. Of course, the British Queen is nominal head, but still she is considered as the head of the state of such countries. So there are certain countries like Mozambique, Namibia, and Rwanda. They do not have any history of British colonial rule, but still they are part of the Commonwealth nations. So it's not that every country which is a part of British Commonwealth or Commonwealth of Nations has been a part of British colonial empire. So that statement would be incorrect in case you find that. Okay, so a little background of this Commonwealth of Nations. So in 1884, when Britain had just given the dominion status to Australia, so when Lord Rosebery visited that place, he described that there is a changing nature of British Empire with its former colonies, and all these former colonies which have become the dominion of British Empire, they are Commonwealth. They are also part of Commonwealth of Nations. So in 1920s there was an imperial conference also, in which it was decided that all such self-governing colonies and those countries which enjoyed dominion status, they are part of this British Commonwealth. And in 1931 a statute of Westminster was signed, and it gave a formal recognition to the British Commonwealth or the Commonwealth of Nations. So history of Queen rule in India. So Queen's family, it is also known as the House of Windsor. So the since 1876 Queen Victoria was the ruling monarch in India. But the last monarch of this House of Windsor was the George VI, who was the father of the current Queen, Queen Elizabeth II. And the House of Windsor's legal ties with India were severed after India became a republic in 1950. Okay, so now let us see the next topic, which is Amur Falcons. तो अभी जो है आपके जो साउथ ईस्टर्न साइबेरिया और नदर्न चाइना से जो ये अमूर फाल्कन्स जो है, ये माइग्रेशन करते हुए जब ये उड़ते हुए जा रहे हैं अफ्रीका की तरफ, तो ये बीच में मणिपुर वाली जो एरिया में टैमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में रुके हैं, वहाँ पर ये अपनी एनुअली ब्रीडिंग करते हैं. तो वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है मणिपुर के, उन्होंने बोला है कि इनको हंट मत करो क्योंकि ये पनिशेबल क्राइम है. तो इस एरिया में ये हर साल रुकते हैं, वहाँ पर अपनी ब्रीडिंग करते हैं और फिर ये वापस जो है अपना आगे आ जाते हैं विंटर में जो अपना अफ्रीका में. ठीक है, तो हंटिंग ऑफ द बर्ड जो है वो वैसे भी वहाँ पर एक क्रिमिनल जो है वो एक्ट है, मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है हंटिंग करना इसका एक पनिशेबल क्राइम है. 25,000 रुपये तक की जो है वो फ़ाइन हो सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है. तो अमूर फाल्कन जो है उसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. अमूर फाल्कन्स. So this migratory birds, Amur falcons, which started their flight from southeastern Siberia and northern China, because they want to go to southern and east Africa for winters. They have made a stopover in Manipur. They do it every year, and they breed in these areas. So this they have stopped even this year, and they are breeding here. So the state environment minister has appealed to the people that they should not hunt these seasonal visitors. Already there is a punishable offense of hunting this bird under the Manipur Wildlife Act. And this Amur falcon is it is having an IUCN status of least concern. Okay, so now let us see the next topic, which is Trigonoterus corona. तो इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी जो है, वहाँ पर 28 न्यू स्पीशीज़ हैं बीटल्स के, वो पाए गए हैं. उसमें से एक स्पीशीज़ का नाम जो है वो ये रखा गया है, ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना. तो ये एक समझ लो ये आपकी कोरोना वायरस के ऊपर ही नाम रखा गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है कोविड पैंडमिक का जो है वो एक इम्पैक्ट देखने को मिला था. तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस एक बीटल का नाम जो है वो कोरोना के नाम पर ही रख दिया जाए. तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी डिसीज़ के नाम पर, या फिर रादर क्या पहली बार कोरोना के नाम पर किसी एनिमल या किसी स्पीशीज़ का नाम रखा गया? नो,
नीचे ये बहुत सारी स्पीशीज़ का आपको नाम दिया है मैंने यहाँ पर, तो इन सब का नाम भी जो है कोरोना वायरस के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। So now let us see this topic in English. Trigonopterus corona. So on the Indonesian island of Sulawesi, 28 new species of beetles were found, and scientists uh, decided that one of these species would be known as Trigonopterus corona. So this species has been named after corona, and it is reflecting the impact of COVID pandemic on this project. So this Trigonopterus corona is not the first species to be named after corona. There are other species which are mentioned here, which have been named after the coronavirus, and these species have also been named after coronavirus. So this particular species is not the first one to join to be named after this virus. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.